हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो देखो, अगर ये वीडियो लेट हो जाना है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होने वाली, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। इसमें मेरी पूरी की पूरी गलती होने वाली है मेरे फाइबर कनेक्शन की, यानी कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। भाई देखो, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्यूसडे को, और जो मेरा राउटर है वो सैटरडे नाइट में स्ट्रीम कर रहा था, और उस स्ट्रीम के बीच में मेरा राउटर खराब हो गया। इसी तरह बस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्ट्रीम वगैरह मेरा सब बंद हो चुका है। बट एनीवेज, जैसे कि तुम लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, सो आज मैं देखने वाला हूँ द मोस्ट व्यूड हॉरर वीडियोस ऑफ यूट्यूब, ठीक है। भाई देखो, मैं पहले ही बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे को ये हॉरर वॉरर चीजों से बहुत डर लगता है। एनीवेज गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, तो पहला वीडियो आ चुका है, चलो अब शुरू करते हैं देखना, ठीक है। वैसे मेरी फट तो बहुत रही है, ठीक है। In the following video, a group of friends are having a small gathering as they all collectively sing to a song of worship. The person recording pans around the room to capture this harmonious ceremony, thinking that this evening will end well. But little did they know that something would happen during this gathering that would haunt them forever. Be sure to pay close attention, as no one had noticed it until looking closely. Take a look. एक अरे भाई, मेरे को लेजेंड लगा था मेरा स्क्रीन हिला होगा थोड़ा। वो मैं इसकी आग स्पीड देखा तुमने उसके हिलने का? As the camera pans over to the hallway, a shadow-like figure can be seen. भाई स्पीड क्या है इसका? फॉर्मूला 1 कार फेल हो जाए भाई इसके सामने। ओके भाई, सेकंड वीडियो आ चुका है, देखते हैं ये कैसा है। उसमें तो बंदा भाग गया, अब इसमें देखते हैं क्या होता है। Place in Mexico that used to be known as the Disneyland of Latin America. Reino Mágico was a small theme park that opened in 1988 and closed only a few years later after multiple fatal accidents took place inside the park. It's unknown if the park had shut down for this reason, but some believe that the park had closed its doors for the simple fact that many visitors reported paranormal experiences while being there. This isn't surprising to some people, as the park was built on a cemetery. शमशान घाट के ऊपर कौन बनाता है यार पार्क? उसमें बच्चे बच्चे खेलने आते, तुम शमशान घाट के ऊपर पार्क बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो यार। Explorers are certainly creeped out by this fact. मेरे को अगर पता होता ना ऐसा कि कोई पार्क शमशान घाट के ऊपर बना है, मैं तो जाता भी नहीं, चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो जाए, डिज्नीलैंड ही बन जाए भाई। But they're even more creeped out by the statues that were left behind. Rumor has it that the statue of Snow White is haunted. Nightly visitors have reported seeing the statue in a spot that was not the same as where it was originally seen. It's as though it moved on its own. One night, a group of friends visit the abandoned theme park when something very strange is captured on camera. Take a look. एक तो भाई लॉन्डो में इतने कीड़े होते हैं ना कि जाके भूत को देखना है। भूत है, रहने दो उसको अपने पास, तुमको क्यों देखना है कि हाँ भूत कैसा दिखता है। Güey, ese es el velador de. Es el velador, ¿no? Ah, velador. ¡Ey! अब पेट्रोल गार्ड है तो हाई बोल के निकल जाओ, सामने जूम करके हे क्या कर रहे हो बे, हद है। Aguanta, espérate, ey. Shh, no te muevas. No mames, no te muevas, no te muevas ahí. Güey. ¿Velador? Ese no es el velador, güey. Güey, no es el velador. No. No, aguanta. Deja que mi cámara enfoque bien, deja que mi cámara enfoque bien. हाँ, कैमरा फोकस करो भाई, कैमरा फोकस करो। भूत का चेहरा अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। बाकी बाद में जो हमें हमारा बॉडी लेना आएगा, उसको वीडियो में अच्छे से दिखना चाहिए भूत का चेहरा। Bien. Deja que mi cámara enfoque bien, güey. भाई उस पे कैमरा फोकस करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेट्रोल गार्ड स्कर्ट पहन के पेट्रोलिंग कर रहा होगा। Eso no es el velador. No digas perras mamadas, güey. No digas perras mamadas. भाई बंदा भाग के जा रहे देखने के लिए। अरे तेरे को तू दिख रहा है कि वो पेट्रोल गार्ड नहीं है, तेरे को इतना पता है कि उधर पे भूत रहते हैं। नहीं, मेरे को तो सामने जाके देख के आना है भूत को। भूत लड़की है ना भाई, तो जाना है भाई, देखना है, भूत ही क्यों ना हो, देख के आते हैं, मिल के आते हैं, हाय हेलो बोल के आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो हमें मारे तो देगी, और क्या होगा। ¿Fue aquí? No digas mamadas, güey. Miren. एजेंट तुम लोग देख रहे हो, वो उसके सामने आ गए हैं यार। मेरे सामने ऐसा कुछ होता, मैं भाग के घर पहुंच जाता होता। ओके भाई, अब आ चुका है नेक्स्ट वीडियो। पहले वीडियो में कोई फॉर्मूला 1 कार से तेज भाग रहा है, सेकंड वीडियो में कोई पुतला भाग के कहीं जा रहा है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन भागता है। 9th of 2023,
an unsettling video was posted by a girl named Pupe who was home alone when something pretty terrifying was captured. The video starts off with Pupe lying on the couch before she suddenly realizes that someone or something is in her house. She was on her phone when she glanced over at the corner of the room and saw what looked to be a person standing completely still. Someone was watching her. Although freaked out at first, she began to laugh as she had a feeling that this was either her friend or boyfriend who was pulling a prank. But little did she know, this wasn't a prank. A mysterious presence has invaded Pupa's home. The following is her video. Wow. वाह, नहीं नहीं ठीक है, हमें सामने कोई दिख रहा है कि ऐसे अनजान आदमी कोई खड़ा है, आके पहले मोबाइल निकाल के वीडियो कर लेते हैं, भाग तो बाद में भी जाएंगे ना, वीडियो बना लेते हैं, वायरल हो जाए तो क्या पता। Qué miedo que das. ¿Qué haces? क्या कर रहे हैं? नहीं दीदी, वो टिकटॉक पे वीडियोस बना रही है, जाओ आप भी साथ दे दो उसका। ओके, अब और एक वीडियो देखते हैं, इस पे क्या हुआ है। Late at night, when a mother and daughter arrive home, the security camera at the front entrance records them pulling up to the gate of the house when out of nowhere, something very strange happens. This video was posted by Mary Carmen, the daughter in this video, who lives on a small farm with a lot of animals. Now, the animals on this farm would do things that would make her feel as though she were taking care of children. To her, this place feels more like a daycare than a farm. But the biggest child, according to her, is her dog, who's known as Scott. ओए, From कितना क्यूट है यार ये। dancing with his so-called mom to going on boat rides whenever he gets the chance, Mary Carmen has a special place in her heart for Scott. But unfortunately, one night, something happened that left her completely devastated. She had come home with her mother after having dinner at a relative's when she found Scott lying in his bed. He seemed unusually quiet, which he never was. Scott had passed away. Bro, Now, it wasn't until grieving for days on end that she finally looked at the security cameras that captured Scott's final moments before passing. Based on the footage, he passed away only a few hours before Mary Carmen returned home. He was already gone before she came. But after looking at the footage of when she arrived, she immediately noticed something strange. What was captured had brought her to tears. Have a look. ब्रो उसका स्पिरिट, भाई पूरा सीरियसली उसके दो आंखें दिख रहे हैं यार, उस पे देखना, ये देखो ये देखो, लेजिट तो आंखें है ब्रो इधर। नहीं इतना लॉयल भी नहीं होना चाहिए यार पेट्स को। भाई लेजिट वो पूरा हिल रहा है यार, वो हिल रहा है पूरा। ओके दूसरा वीडियो आ चुका है, और ये बच्ची ऐसी क्यों देख रही है, मेरे को पहले से ही डर लग रहा है। May 24th of 2023, at around 10 p.m., a baby monitor captures something pretty spooky on camera. This video was posted by Marquette Jean, who's concerned for the safety of her daughter, as something very strange was captured inside her child's bedroom. The video begins with her daughter, who appears to be staring blankly at the window that's behind the camera. It's unknown as to what exactly it is that she's seeing, but whatever it might be, it seems to have her full attention. She continues to stare at this window when suddenly the camera picks up movement from inside the room. But as we can see in the footage, nothing is moving. Now, the family used to have a cat, and the camera would often pick up the cat's movement, but no cat is seen here, as their cat had passed away in August of last year. ये सारे मरी क्यों रहे हैं यार? However, as Marquette watches the baby monitor, this happens.
सच्ची में डर गया था, मैं सच्ची में डर गया था। ये जैसे अचानक से आया, तुम्हें भी डर लग जाएगा, देखना भी। भाई लेजिट वो ऐसे सामने से आया भाई, मेरे सच्ची में पड़ गई यार। ये क्या था ये? अरे ये अब सारे पेट्स यार इतनी लॉयल होने की भी जरूरत नहीं है यार पेट्स को कि तुम मरने के बाद भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ो। ओके गाइस, सेकंड वीडियो आ चुका है, अब इसमें देखते हैं कौन सा पेट भाग के आता है। Video, a man named Win is washing dishes in the kitchen when he hears a strange noise coming from his basement. अच्छा मेरे को एक पहले तो ये बात समझो भाई, बंदा बर्तन धो रहा है, उसके पास फोन कहाँ से आ गया? This basement, according to Win, is a place that he and his family avoid entering at all costs. There's something about it that isn't right. Now, अच्छा लेकिन फिर भी जो है बेसमेंट का दरवाजा एकदम खुला रखा है कि भाई अगर अंदर कोई हो तो आराम से आना यार, आके खाना वाना खा के जाओ, हमारे साथ बैठो बैठो टीवी वीवी देखो, उस पे क्या है, बस हम तुम्हारे घर नहीं आए कि तुम हमारे घर आ जाओ। भाई बाहर के लोग तो और गधे हैं, मैं बता रहा हूँ, फॉरेनर्स। inside this space भगवान जाने ये हमसे इतना ज्यादा डेवलप्ड कैसे है। that neither Win nor his family could explain. As Win states, he was by himself in the basement when out of nowhere, a small swing he had recently bought began to swing on its own. Although not really sure how to explain this, अरे हवा ववा लग क्या होगा, हवा 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 से हिल रहा होगा, और क्या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? it would be the following incident that occurred only days later that leaves him extremely baffled. While being alone at home with his son, a loud banging noise on the basement door is suddenly heard. But when he checks to see as to who or what was banging on the door, he finds no one there. Can you get it? Understandably, this occurrence has left the family feeling thoroughly petrified. But as if that wasn't enough to freak them out, the following video captures this. Win is down in the kitchen washing dishes when his dog starts barking at the basement door. He immediately takes out his phone and begins to record. Go lie down. मैं कुत्ते के भौंकने से डर गया मैं। It's okay. Lie down. Stay. Been doing this all morning and I don't have time for this today. Stop. Hey buddy. I got too much going on. You gotta cut it out. Oh shit. वाह कितने अच्छे से बोल रहा है भाई। नहीं वो तो तेरा चच्चा लगता है ना यार, भूत के साथ इतने अच्छे से कौन बात कर रहा है कि हाँ भाई देख तू जो भी है ऐसा मत कर भाई, सुबह से कर रहा है तो ऐसा मत कर, ठीक है? Oh shit. Okay. Just gonna set it up with towels and we'll just let the phone roll. भाई बंदा वापस जाके बर्तन धोने लगा है। इसे बोलते हैं रियल हस्बैंड मटेरियल, समझ रहे हो तुम लोग? सामने भूत दिख रहा है, भूत दरवाजा खोल के अंदर आना चाहता है, लेकिन बंदे को पहले डिश वॉश करना है। I asked you if you gotta go or you gotta go downstairs or something. Wherever you're gonna go, you gotta go. Calm down. He's okay. इसको खेलने में मजा आ रहा है, पता है तुम लोगों को? ये भूत जरूर एक बच्चा होगा तभी इसको खेलने में मजा आ रहा है। Please, not today. Just हाँ आज नहीं, आज बस मैं और मेरा बच्चा ही है, जब पूरा फैमिली होगा तब आना, मस्त तो एकदम खाना वाना खाएंगे, टीवी वीवी देखेंगे, फिर तुम जाना, चले जाना अपना वापस सोने वोने के लिए। holy cow. होली काओ, तुम गाय को क्यों ला रहे हो बीच में? Sounding fed up with the supposed spirit, Win begs the entity to stop, but this only seemed to make things worse as the door to the basement began to continuously open on its own soon after. It isn't until looking closely at the doorway, however, that someone or something appears. भाई Like something out of a nightmare, the shadowy figure seemingly fades into the darkness before reappearing again as a giant shadow. भाई तुम लोग का नहीं पता, अगर मेरा मेरे घर वर में ऐसा कुछ दिख जाए ना मेरे को कभी, मैं उस घर तो छोड़ो उस गांव में जिंदगी में वापस नहीं आ रहा। Feeling beyond spooked, Win is absolutely certain that he won't be entering. ये ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान से सांप बन गया, नागिन है क्या भाई?
ओके, सो होपफुली यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, और अगर पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट में बताना जरूर तुम्हें कैसा वीडियो लगा है। और कमेंट करो यार, कमेंट से अच्छा लगता है, इधर इधर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई देख रहा है वीडियो को। इधर समझ भी नहीं आता, मतलब व्यूज आते रहते कोई कुछ फीडबैक ही नहीं मिलता, सिर्फ लाइक से भाई फीडबैक नहीं आता यार। तो कम से कम कोई सजेशन ही डाल दो कि और मैं वीडियोस को कैसे अच्छा करूं। सो यस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।